So we will move on to the next topic, which is how to do snapshot prediction. See, सुनने में जितना complicated लगता है, करने में उतना ही easy है. This is a very very easy thing that I do for snapshot prediction. The first thing you understood that you have to think of that querent, see the querent's picture, ask for date of birth or as much as information like mother's name, and the photo is very important. If they can send you, they are comfortable. Look at that querent's photo, repeat the question. The question should be very clear and precise, and while thinking of the question, you shuffle the card. Okay, while shuffling the card, some cards may pop out. For example, when will I get a new job, you have already done yes or no spread, and you can see that the person will get a job, no doubt. And while shuffling, let's say this card pops out, and this is ace of swords. For popped out cards, you have to always take it upright, because when it will come popped out, you don't know it is reverse or upright. So in that case, you can choose to read it upright. See, ace of swords ayana, which means it is going to happen very very soon. Ace of swords, I will explain the meaning. Aces are beginning, and because ये beginning का ही card आ गया, which means it is going to happen very very soon. So snapshot prediction ऐसे ही देते हैं. I will also teach you how to calculate timing. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. Time calculation कैसे करते हैं? It is very easy technique. I will explain how to use the spread and then calculate timing. Okay. So for snapshot prediction, you have to use popped out cards. Sometimes the card may pop out. Sometimes the card may not pop out. You don't have to worry about this situation when the card does not pop out. In that case, whatever spread you have thought in your mind, use that spread, which means कार्ड पॉप आउट नहीं हुआ, आराम से अपने डेक को स्प्रेड करो, और लेट्स से 6 कार्ड्स का स्प्रेड करना था, पुल आउट 6 कार्ड्स एंड स्टार्ट डूइंग द प्रेडिक्शन फ्रॉम 6 कार्ड्स. कार्ड्स पॉप आउट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट थिंग, आफ्टर 3 कार्ड्स स्प्रेड, I want to explain 6 card spread. ठीक है? 6 card spread. Now everyone should have their deck in their hand. Shuffle it, spread it, or on screen you can see the cards number 1, 2, 3, 4, 5. The first card should be towards you. Nikalo. Think of a question. Concentrate. Take your time. Ma'am, one second, I have a doubt. Yes, Ambika? Ma'am, while shuffling, you asked us to take out 6 cards, right? Like whichever we hold in our hand. So do we have to, turn it from right side and keep it in front of us? First shuffle the cards, then spread the deck, and then pull out from 6 different places one by one. And Ma'am, ऐसे pull out किया ना, like this you have pulled out from the spread, ऐसे ही रख. Just pull out 6 cards. I did not tell you to reverse it. Okay, fine. Pull it out only. First card near to you. Second card on your left hand. Third card on your right hand side. Fourth card thoda dur. Fifth card in the middle, between 2 और 3 के बीच में. And sixth card कहीं पे भी side में निकाल दो. Do this. Now I will explain what are the meaning of these 6 cards, and you all can see your cards one by one. So the first card is the past. See, when you will do tarot card reading, always remember there should be a card which indicates past. There should be a card. आप अपना खुद का कोई tarot spread frame कर रहे हो, you are using, let's say आपने 5 कार्ड का कोई एक डिजाइन किया है spread, there should be a card that indicates past. Why? Because past ही तो decide करेगा कि future में क्या होना है. The person has done something in the past, good, bad, whatever.
उसका पास्ट का कर्मा भी तो उसको डिसाइड करे, दैट विल डिसाइड नो द सिचुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. इफ यू हैव नॉट डन इनफ हार्ड वर्क इन द पास्ट, हाउ यू विल गेट द रिवॉर्ड? तो आपको यहाँ पे पता चलेगा क्वेरेंट ने पास्ट में क्या क्या किया है. अंडरस्टूड? So the one card should be there for which indicates past. Then the card number 2 here in this case indicates obstacle in the path of that querent. Third card in this case indicates what are the influences working in favor of this querent. Fourth card indicates near future. What is going to happen in near future? Fifth card, what is going to happen in long term future? And sixth card is the ultimate outcome. Ultimately क्या होगा? Everyone understood at least the concept समझ में आ गया? अब हम किसी एक का एग्जाम्पल लेंगे. ममता, टेल मी व्हाट वाज योर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वाज योर क्वेश्चन. I just wanted to know a reaction towards a friend, like that friend is positive or negative towards another person. So just that's like wanted to know negative or positive. Are they really friend or just enemies in back? So that was just intuition I wanted to know. This question is relationship reading. No, you Okay, cannot take this question here. okay, Anyway, you can use this question also. चलो आपके क्वेश्चन को इसमें फिट कर देते हैं. okay. Because as per this spread, you can use any question. You can mute yourself. Mumta. For this spread, 6 card spread can be used for any type of question. So ममता के ही क्वेश्चन को यहाँ फिट कर देते हैं कि पास्ट में इन दोनों का क्या रिलेशन था, नियर फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या होगा, इन दोनों के बीच में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग वेल, इन दोनों के बीच में क्या चीजें हैं जो अच्छी जा रही हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? इशिता, अंबिका, अंडरस्टूड कि आपने इस क्वेश्चन को इस सिचुएशन में कैसे फिट कर दिया. Now, Mamta, tell me what is the card that you got for past? King of Wands. King of Wands. ठीक है. Now, card number 2 is? Left, left one. What is Yeah. that card? Left. Left वाला card. Six. 6 of cups है. Third card, right वाला card. Death. Uh, Death है. उल्टा. चलो उल्टा. उल्टा है, रिवर्स है. ओके. नियर Reverse. फ्यूचर, नियर फ्यूचर. Egg of sword. Egg of swords. एस ऑफ सोड. फिफ्थ कार्ड. Yes. 10 reverse. 10 ऑफ वॉन्ड्स है वो. ठीक है. अल्टीमेट आउटकम क्या है? Uh, 4. दिखा दो. 4 ऑफ सोड्स. देखो इन दिस केस Mamta has asked the tarot cards कि tarot cards tell me ये पर्सन ए है पर्सन बी है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहा और कैसा आगे रहेगा. इन द पास्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स, उन दोनों में से कोई एक बहुत अच्छा गाइड था, उसने अच्छे से गाइड किया, सब कुछ अच्छे से मतलब रिलेशनशिप वाज गुड. इन दोनों के ऑब्स्टिकल में आया था. विच कार्ड वाज देयर? 4. Sorry, 6. 6 of cups for the obstacle. Yes, it was there for the obstacle. Which means somewhere ये काफी पुराने फ्रेंड हैं, बट इनके आज रिलेशंस ठीक नहीं है. एम आई राइट ममता? Hmm. ठीक है. द कार्ड दैट इज देयर फॉर द इन्फ्लुएंसेस वर्किंग इन फेवर इज द डेथ कार्ड. अब सोचो, दिस इज सच अ नेगेटिव कार्ड बट इट हैज कम इन द प्लेस ऑफ influences working in the favor, which means situation will change. Death card means transformation. Situation will change. ठीक है. नियर फ्यूचर कार्ड वाज एस ऑफ सोर्ड्स. समथिंग न्यू, Yeah. कुछ इनिशिएटिव होगा दोनों में, दोनों के तरफ से सम इनिशिएटिव विल बी टेकन एंड रिलेशन थोड़ा अच्छा होने के चांस है. लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. देखो वो 10 ऑफ वॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड है. अब जब वो रिवर्स में आया ना, कुछ एक्स्ट्रा बैगेज ये लोग छोड़ेंगे. जो पुरानी बातें थी, पुराना ग्रज था, वो एक्स्ट्रा बैगेज वो छोड़ेंगे.
और इनिशिएटिव लेंगे आगे कुछ करने का, बट अल्टीमेट आउटकम में ना नो कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है। दिस फोर ऑफ Okay. सोर्स, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन फॉर सम टाइम। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। ममता विल टेल अस कि कितना रिलेट किया है सिचुएशन, टेल मी। Hmm. It is related to like it's somewhat I can feel like they are not talking, दे आर नॉट टॉकिंग। and they have a like a sort of soul relation, not bad, not good. हम्म, So I just wanted to understand this situation. यहाँ पे देखो नॉट बैड नॉट गुड तो है, चाहते हैं बैगेज छोड़ना, ग्रजेस छोड़ना, लेकिन बात करके सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। No. है? True. ये सिचुएशन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इशिता, बताइए। ओके मैम एक बार ये बताइए, नो कम्युनिकेशन कार्ड कौन सा आया था? मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छा डोंट। ओके ठीक है। ओके सो माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माय करियर, जॉब और ये वाला लाइन जो क्वेश्चन था उसी का था। टू मेनी रिवर्स कार्ड सो लिटिल अपसेट। तो फर्स्ट दैट केम वाज थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। second that came was the world reversed. ओके। थर्ड आया है टू ऑफ swords reversed, और फोर्थ है थ्री ऑफ wands reversed. ओके, फिफ्थ। Fifth is six of pentacles reversed, हाँ, एंड सिक्स्थ। and the final one is 10 of cups upright. देखिए, दिस इज नॉट अ बैड स्प्रेड। Hmm. You have got reverse cards of two of swords. Two of swords means duality. दिमाग में confusion है, but आपका reverse आया. You have got this card in reverse. You will get out of this confusion. Okay. In the meaning of cards, तब आपको पता चलेगा कि reverse में भी cards अच्छे ही meaning के होते हैं, खराब नहीं होते। Past में three of cups, you enjoyed your work. आप Yes. हमेशा अपने काम को एंजॉय करती थी। ऑब्स्टिकल के कार्ड में क्या आया है? वर्ल्ड इन रिवर्स। यू Yes. आर नॉट ट्रस्टिंग योर लक माय डियर। I'm not. वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर लक। नियर फ्यूचर, Near future was third ना? थ्री ऑफ कौन सा? रिवर्स। देखिए, दिस कार्ड इज नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अगर आप अपने इंट्यूशन को यूज करेंगी और लेट्स से आपने इस कार्ड को रिवर्स नहीं चाहा, आई डोंट वांट टू रीड दिस रिवर्स, तो थ्री ऑफ कप्स अपराइट इज अ वेरी गुड कार्ड। Your worries will be solved. Someone will contact you wherever you have applied. They will come and connect with you. उनका call, message, email आएगा। ठीक है। Okay. फिफ्थ कार्ड इज Six of pentacles reversed. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को भी हम अपराइट काउंट कर लेते हैं बिकॉज बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं। When all the other cards are good, why to read this card as reverse? Six of Yes. Pentacles in upright means अच्छी salary. Okay. And Ten of Cups is the ultimate outcome, which is a yes card, which also means you will join a company where you will feel like home. Okay. 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 So this is the spread. Thank Ambika you. also wants to explain. बताइए Ambika. Ma'am, I got this first card as Ace of Swords. Ace of Swords. Okay. Yeah. First, what is? Actually, I did not ask the question properly, so. हाँ. Ambika, we'll do some other spread and take your question. क्योंकि you Yeah. have to ask a question. Otherwise, cards explain करे ही नहीं जा सकते हैं. ठीक है? Yeah. तो यहाँ पे we understood how to do 6 cards spread, and with Mamta's example we understood we can fit any question in this spread. Ishita's question was very much clear cut कि job कब लगेगी, right? It was your question. So you understood how to do 6 card spread. अब इसको practice करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने friends को phone करिए, बोलिए ask me a question and practice this spread more and more. Okay?